The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. Dare to be free, dare to go as far as your thought leads, and dare to carry that out in your life. Good afternoon to one and all present here. I, Hani Khurana and Ananya Verma, students of BJMC second year, welcome you all to the program on National Youth Day, organized by SPARK. SPARK stands for Student with Positive Attitude and Resonating Communication. National Youth Day, also known as Vivekananda Jayanti, is celebrated on 12th January, being the birthday of Swami Vivekananda. In 1984, the government of India declared this day as National Youth Day. Vivekananda, original name Narendra Dutt, Dutt was a Hindu spiritual leader and reformer in India who attempted to combine Indian spirituality with Western material progress, maintaining that the two supplemented and complemented one another. His absolute was a person's own higher self. To labor for the benefit of humanity was the noblest endeavor. Swami Vivekananda ji once said, "Take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone." This is the way to success, and it is inspiring us even today. Indeed, very true and enlightening words. Now let us hear the opening remarks from Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, on the occasion of National Youth Day. To address the gathering, over to you, sir. Thank you, Ananya. So it's a matter of pleasure that we are organizing this function on the eve of the birth anniversary of Swami Vivekananda. And we are holding this program today, and the initiative has been taken by SPARK, which is a student council. And the whole idea behind, since the time we started organizing this event as an annual event and put it in our calendar, basically the idea is that we get some kind of inspiration from all such leaders who have shaped this country, not only this country, who have shaped this entire world. And if we can get some inspiration, obviously whatever Swami Vivekananda said, that is an inspiration for each one of us, irrespective of age or any other consideration. But definitely Dr. Swami Vivekananda basically addressed the youth. And that is how Government of India declared it as a National Youth Day. So this youth of today will be shouldering a lot of responsibilities as far as the nation building is concerned. So it is the youth who should know about Swami Vivekananda, about his teachings, about his life, and whatever we can take from his life and can implement all that into our lives. And this time we have invited a very senior monk from the Ramkrishna mission order, Swami Vedatitananda ji, who has kindly agreed to grace this event. So it is a matter of pride for us all. Then we will be able to listen to him. So I welcome Swamiji in this function. And as this whole event has been planned by the students, so I will not speak much because I'm looking forward to listen to Swami Vedatitananda ji. And before that, I will request the organizers, the students, and the faculty member, facilitator to please take the program forward. Thank you, sir, for such insightful words.
I welcome today's special guest, Swami Vedatitananda, Correspondent Ramkrishna Mission, Shilpamamdira, Belur. Before we hear from you, we would like to inform that Spark organized 2 competitions in recognition of Swami Vivekananda's teaching and philosophy in contemporary society. The competitions were caption writing and speech. The topics are Swami Vivekananda resonating in 21st century, National Youth Day, a reminder of youth's conviction. For the speech competition, it was divided in 2 parts. The first was the writing part, and the shortlisted students will now deliver their speeches. I request Dr. Manaswi Maheshwari, Associate Professor, DME Media School, and Ms. Manmeet Kaur, Assistant Professor, DME Media School, to evaluate the speech round. Before starting, I would like to remind you all that every participant has 3 minutes to deliver their speech. So let us begin to hear from the students. The first would be Tulsi Tiwari. Over to you, Tulsi. Hi everyone. I'm Tulsi Tiwari. I'm gonna deliver a speech on the topic Swami Vivekananda resonating in 21st century. स्वामी विवेकानंद एक प्रभावी हस्ती जो आज भी हमें उत्साह से भर देती है। उनके विचार, उनके संकल्प और उनका अपने राष्ट्र के प्रति, अपने भारत के प्रति उसमें रम जाना, ये सब याद करते ही जैसे कुछ कर जाने की इच्छा भर देती है। हम उनकी जीवन शैली में ध्यान दें या उनका हर चीज को देखने का नजरिया हमें प्रभावित करता है। स्वामी जी का मानना था कि किसी को अपनी जड़ या अपना कर्तव्य अपने राष्ट्र के संदर्भ में पूरी निष्ठा से निभाना आना चाहिए। वे भारतीय थे और एक यह भी कारण था कि वे हिंदूवाद के लिए अग्रसर रहते थे, क्योंकि वे एक बंगाली ब्राह्मण थे, हिंदू थे, मतलब हिंदू समाज के थे। उनकी धारणा, उनके विचार उस समय के हिसाब से बहुत अलग थे। ये बोल सकते हैं कि आज के मुताबिक थे। उनमें ईश्वर के लिए आस्था थी ही, परंतु वे आत्मसंतुष्ट थे। उन्हें अपने आप पर विश्वास था। कुछ भी करते थे पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ करते थे। वे चाहते थे कि उस समय के युवा अथवा आज के युवा भी अपने निश्चय पर काम करें, नई सोच के साथ उभरे। यहाँ तक कि उन्होंने हमें बड़ी आध्यात्मिक विषय से परिचय कराया है, योग। आज के युग में हमारा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। यहाँ स्वामी जी का योग परिचय इस युग में अपने में उतारना अनिवार्य होना चाहिए, बल्कि हमें ये ध्यान योग ईश्वर से जोड़ता है। स्वामी जी का कहना था कि हमें अपने संकल्प पर दृढ़ रहना चाहिए, अपने विचारों में डटे रहना चाहिए। 100 बार गिरे तो 100 बार उठने की कोशिश करना चाहिए। वो युवा अथवा हमें निर्भीक और आत्मनिर्भर का संदेश देना चाहते थे। उन्होंने अपने भारत को अमेरिका में दूसरों के अधीन अपना कर्तव्य निभाते हुए सबके समक्ष रखा और भाषण दिया था। आज भी हम युवा स्वामी जी की धारणा पर खरे उतर सकते हैं, जो हमारी वर्ग को निर्माण की तरफ ले जाएगा, साथ ही हमारे देश की प्रगति होगी। युवा बदलेंगे तो सबकी सोच बदलेगी। हम आज के युवाओं की प्रेरणा होने चाहिए स्वामी जी। हम उनके जैसे अडिग और अटल रह सकते हैं। अपने कार्यों में अगर संभलना सीख लें तो हम उनसे प्रेरित होकर अपना भला, अपने राष्ट्र का भला कर सकते हैं। हम युवाओं में वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है, अगर हिम्मत हो तो। स्वामी विवेकानंद हमारे साथ अपने आदर्शों के रूप में शामिल हैं और रहेंगे। जो सब उन्होंने कुछ साल पहले किया या सोचा या जिससे तत्पर रहे, वो सब आज भी दुनिया में मौजूद है। आज भी हमसे यही सब आस लगाया जाता है कि शायद हम कभी तो नई सोच ला पाएंगे। यही कहना स्वामी जी का भी था। स्वामी जी ने उस समय योग हमें बताया, उससे परिचित कराया, जो अब सब फिर से हमारे जीवन में व्याप्त हो रहा है, उतारा जा रहा है जीवन में। और मेरी राय में तो ये अच्छी सोच है। वो कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। हमारा ये सब स्वामी जी के विचार आधारों को अपने जीवन में दर्शाना हमारे लिए लाभदायी ही होगा। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू। अपने संकल्प पर दृढ़ रहना चाहिए, अपने विचारों में डटे रहना चाहिए। 100 बार गिरो तो 100 बार उठने की कोशिश भी करते रहना चाहिए।
Well said. With this thought, moving on to the next student, let's call Jay Serohi. Over to you, Jay. Um, Good morning, ladies and gentlemen. I, J.S. Rui, student of first year BAJMC batch 2021 to 2024, welcome you to the convocation of 25th National Youth Day. This day was introduced by our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, in 2013 on one of India's greatest spiritual and social leaders, Swami Vivekananda's 150th birth anniversary, to honor him. And on 12th January 2022, he turns 159-year-old. Swami Vivekananda believed that we, the youth, have the power to bring change. We have the power to change the world and transform it into a better place for a living, a peaceful and healthy life. Through his religious teachings, we always thought to give the extra to the weaker section of the society in order to uplift them. He believed that everyone has a right to live a happy life, and we should all work together in order to achieve that goal. We, the youth today, are empowered with resources and knowledge. Swami Vivekananda always taught to never suppress our feelings and to always be opinionated. And in today's time, it is really important for the youth to follow such teachings. In order to bring the change in the society, we need to come out of our shells and tell the world what we actually want. Until and unless we won't tell the nation, the world, that what we actually want, till then there will be no change. We have to fight for our rights. No matter how powerful the person is in front of us who is doing wrong, if we are together, we will never lose. We have to not just state our opinions, but also have to work on them. We can't just sit and complain about what we don't like and what we don't have. We have to bring solutions for the problems we face. It is us only who is going to transform the society through our workings. I have always learned from our teachers that sitting and crying is not a solution to a problem. The solution is going out, gathering a team, and working along with them, and the result will turn out to be good. If we have decided to bring the change in ourselves and to never be afraid of something, then no one can ever defeat us. And so today, I request you all, the youth of a society, to gather bravery, to enrich your knowledge, to improve your skills, and take a step forward to the world of your choice, the world where we decide what we want to study, what we want to preach, what we want to eat, what we want to see in a society, with whom we want to live, and how we want to live. Every generation has a leader, has seen a team who have made their names known for not silent screams inside the head, but for their shouts, the shouts of words of independence and freedom for their choice of life. And we have to move on the same path, but in our own ways, to set an example for the next generation, to look at us and to be proud of us and be inspired, to bring out the change for the world of their choice when their time comes. Let this youth day be the starting for a change for a better world. Thank you. Yes, as Jay said, this youth day, let's bring a change for a better tomorrow. Moving on, next student will be Shashank Kumar. Over to you, Shashank. नमस्कार, मैं शशांक कुमार आप सभी का सहृदय नमस्कार करता हूं तथा राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं डीएमई मीडिया स्कूल के फर्स्ट ईयर का छात्र हूं और यहां 21वीं सदी के स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका के बारे में प्रकाश डालने वाला हूं। हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकार सकते कि हमारा भारतवर्ष अनेक महापुरुषों तथा वीर गाथाओं को समेटे हुए एक ऐसी अमर भूमि है जहां 12 जनवरी 1863 को बंगाल के एक छोटे से परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी जी एक उच्च कोटि के संत थे जिनके विचारों और आज भी यानी 21वीं सदी के आधुनिक पीढ़ी में भी सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक नया उमंग, जोश और स्फूर्ति भर जाता है। जहां तक मेरा ख्याल है, सरल व्यक्तित्व तथा अद्भुत क्षमता के स्वामी होने के बावजूद स्वामी जी के जैसा ना ही कोई इस दुनिया में या फिर इस भारतवर्ष में पैदा हुआ है और ना ही कभी होगा। उन्होंने देशों विदेशों में भारत का जो डंका बजवाया है वो विश्व के लिए आज भी एक मिसाल है। उनके शिकागो धर्म सम्मेलन को कौन ही भूल सकता है। उन्होंने इंग्लैंड, यूरोप तथा अमेरिका में हिंदू दर्शन तथा वेद वेदांतों के का प्रसार जो किया, जहां हम आधुनिकता, फैशन और नई पीढ़ियों की बातें करते हैं, वहीं उन्होंने देशभक्त,
सन्यासी के रूप में भगवा पहनकर पूरे विश्व का भ्रमण कराए और भारत का नाम रोशन किया। स्वामी जी के कुछ विचार मैं यहाँ पे आपसे साझा करना चाहूंगा, जो 21वीं सदी में तो क्या हर सदी के लिए नई ही रहेगी और हम युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करती रहेगी। तो उनका पहला जो कथन था, जिसे मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, उसे कहेंगे वो है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका दूसरा कथन था, एक समय में एक ही काम करो ताकि और वो पूरी आत्मा से करो। एक अच्छे चरित्र का तीसरा उनका कोट था, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो, ये उनका चौथा कथन था। और मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण होता है हम युवाओं के लिए, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ भी हमारे साथ घटनाएं होती हैं तो हम उनपे बार बार सोचने लगते हैं और नई बातें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ये उनका पांचवा कथन था। तो अभी तो ये बहुत से कम थॉट्स हैं उनके, बहुत ही कम विचार हैं। उनके विचार हर पल बेचैन इस दुनिया में ठीक उसी प्रकार हमारे लिए सुकूनदेह हैं जैसे किसी प्यासे के लिए रेगिस्तान में मरुद्यान का होना। स्वामी जी एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक महान शिक्षाविद भी थे। वो एक उत्कृष्ट शिक्षाविद थे और शिक्षा शास्त्र में उन्होंने जो काम किया उनको आत्मसात करने के लिए हमें उनके कहे कर्म प्रधान मार्ग पर चलना होगा, जिसके अनुसार कर्म प्रधान मार्ग पर चलने के लिए, जीवन जीने के लिए उनके अलग अलग आयाम पर ध्यान देना होगा। स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बालक और बालिकाओं दोनों को शिक्षा पर समान रूप से जोड़ दिया है और इस सदी में भी जो अभी भी समस्या बनी हुई है। स्वामी जी आधुनिक युग के कर्मयोगी थे, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को अपने जीवन में उतार कर परिभाषित किया। उनका जीवन चरित्र वचन, कर्म तथा मन तीनों से परिपूर्ण होकर एक अद्भुत मिसाल था। वो कहते हैं ना कि वचन मन तथा कर्मणा, तो उन्होंने बिल्कुल इसका प्रतिपादित किया इस विचार को। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, 21वीं सदी के जीवन में मौजूद सभी चुनौतियों का समाधान स्वामी जी के दर्शन में है। बस जरूरत है उनके विचारों को अपने अंदर आत्मसात करने की। उनका समस्त दर्शन न सिर्फ इसी सदी में अपितु युगों युगांतर तक प्रासंगिक तथा प्रेरणादायी रहेगा। और मैं इस भाषण का, इस स्पीच का अंत करना चाहूंगा एक संस्कृत के श्लोक के साथ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत, जिसका अर्थ होता है उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। धन्यवाद। Moving further, next student will be Khushi Srivastav. Over to you, Khushi. Thank you, Dee. Hello, respected teachers and all the audience who are present here. I am Khushi Srivastav from BJMC, first year student, section B, and I am going to speak on the topic given, National Youth Day, a reminder of youth's conviction. Since 1985, we are celebrating this day as National Youth Day in the honor of Swami Vivekananda, the greatest supporter of youth empowerment. This day has been celebrated all across the globe. There is theme every year for this day on the basis of requirement of global communities and citizens. This year's theme is transforming food systems, youth innovation for human and planetary health. Each year, the country who decide themes are United Nations, and they decides themes on the basis of establish the and this decides themes on the basis of Youth Day. This day has been celebrated through various awareness campaigns, concerts, programs at schools and colleges, rallies, etc. But this year we are celebrating in online mode in the consideration of COVID. The youth is future of upcoming tomorrow. We are the ones who can bring changes, and we are the ones who can fight against all the odds. This is great initiative taken up by the government to shake up eternal energy of the youths. We are the ones who should elect government on the basis of who can do all the work for the betterment of society, for the issues such as poverty, job vacancies, education, women's safety, child labor, etc.
and not on the basis of caste, relation, or to support a specific party. We are the youngsters of New India. We should take responsibility of breaking all the stereotypes and those stereotypical mindsets as well. Those stereotypes and stereotypical mindsets just say, do as we say, do not need to do anything new, do not take charges to something which doesn't go with culture, etc. We as youngsters of New India should educate and create awareness for the betterment of our country. It is a day where we can speak thoughts and objective. We think as youth for the betterment of our country. This is the day where we can spread the ideologies of Swami Vivekananda and motivate the youngsters. This day take place every year, not only in our country, but also outside the country to promote trust among youths, to make the country progressive. This is the 24th celebration of National Youth Day, which has been taking place in virtual mode. The opening and closing of this ceremony both will take place in the parliament. We are the building blocks of our country, which led to the country to its success. On this day, we should participate in various activities such as blood donation, competitions organized by schools and colleges, etc. in mass number. We are the greatest asset of this country who can make an impact on the people of this country. If our country is machine, then we are the alls of this country who have plethora of innovative ideas and who can boost the country with new energies. We should come forward with our strong opinions to contribute to the development of country. We shouldn't be afraid of stepping from our comfort zone. We can achieve anything if we have shown courage and determination. We should always see things beyond our imagination. We should always think out of box and be concrete about ideas. We are almost the half population of this country. We should help our country with various ways, such as financially by guiding poor students to what they might pursue by taking stand against racism, etc. Thank you so much. Thank you, Khushi. We are building blocks of our country, which leads to the country to its success. With this note, we move on to the next student, Tanvi Tripathi. Over to you, Tanvi. Okay, so I'm going to present a speech in Hindi about the great works of Swami Vivekananda ji along with a poem which I wrote on his work. So let's start. Yeah. लक्ष्य तक जागो हमें सिखाया, आध्यात्मिक बनने का आईना दिखाया, समझकर कमजोर खुद को ना करो ये पाप, दिल की सुनो कर्मठ बनो, सदा खुश रहोगे आप, स्वयं पर हो विश्वास तो देता साथ विधाता, सच ही कहा है कि इंसान ही है भाग्य निर्माता, शक्ति है जीवन, निर्बलता मृत्यु समान, द्वेष मृत्यु है, प्रेम एक वरदान। ये है स्वामी विवेकानंद जी के महान विचार जो कि युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं और सबको जानने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्वी त्रिपाठी। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सब लोगों के सामने अपना एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनके जन्म के समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता रखा गया था। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिनके साथ उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। अमेरिका और यूरोप में वेदांत और योग जैसे हिंदू दर्शन की नींव रखी थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदू धर्म के अनुसार विश्व धर्म की स्थिति के अनुसार काम किया था। समकालीन भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जन्म में उन्हें एक प्रमुख शक्ति के रूप में माना जाता है। उन्होंने मुख्यतः सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका पर दिए एक प्रेरणादायक भाषण के लिए सबसे अच्छी तरीके से याद किया जाता है। इसके बाद 1893 में शिकागो में विश्व धर्मों की संसद में हिंदू धर्म को पेश करने में वे सक्षम रहे। 25 वर्ष की आयु में नरेंद्र जी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद जी ने 31 में 1893 में अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों जैसे नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका और टोक्यो समेत दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो वे पहुंचे। 1893 में शिकागो, जो कि अमेरिका का एक सिटी है,
में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि बन के गए थे। यूरोप अमेरिका के लोग जो उस समय पराधीन भारतवासियों को एक हीन दृष्टि से देखते थे, वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिल गया। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। फिर अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की, और इस वजह से वहां की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू भी नाम दे दिया था। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। स्वामी जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। मृत्यु के पहले शाम के समय वो बेलूर मठ में उन्होंने 3 घंटे तक योग किया और उनकी मृत्यु का कारण दिमाग की नसें फटना कहा गया। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने महज 39 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनके महान विचार और प्रेरणादायक बातें युवा पीढ़ी को प्रेरित करती आई हैं और आगे भी प्रेरित करती आएंगी। धन्यवाद। स्वयं पर हो विश्वास तो साथ देता है विधाता, सच ही कहा है इंसान स्वयं ही है भाग्य निर्माता। With this thought, we'll call our next student, Ayushi Verma. Over to you, Ayushi. नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी वर्मा। मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के 3रे वर्ष की विद्यार्थी हूँ। मैं सभी शिक्षकगण, आज के हमारे स्पीकर सर और विद्यार्थी गणों को नमस्कार करती हूँ। और मैं आज कुछ आपके साथ ऐसी विचारधाराओं से आपको अवगत कराना चाहती हूँ जिनकी आज की युवा पीढ़ी को बहुत जरूरत है, और वह महान सोच आएगी स्वामी विवेकानंद की बातों से। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी हस्ती जिसने हमारे विश्व में एकता का प्रचार किया, और बल्कि हमारे जहां भी वह गए, चाहे वो देश था या विदेश, वो जहां भी गए उन्होंने वहां भाईचारे का संदेश दिया। विवेकानंद सिर्फ कुछ बातें ही नहीं जो हम किताबें या सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, वह एक सोच है जो हमें हमारे अपने जीवन की सच्चाई से हमें रूबरू कराती है। कुछ ऐसी विचारधारा कि जब तक जीना तब तक सीखना एक लाइन नहीं बल्कि एक प्रमाण है अपने जीवन के साथ देश को एक नई सोच से रूबरू कराने का। स्वामी जी ये भी कहते हैं कि जैसे भी आप काम करो, एक काम करो पूरी लगन, मेहनत और पूरी क्षमता के साथ। हम सभी की आदत है, हम जो भी जीवन में देखते हैं, अपनी चीजों से तो खुश रहे ना रहे, दूसरे की चीजों से बहुत जल्दी हम दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है लेकिन उसके पास है। चीजों की मांग करना कोई गलत नहीं, इच्छाएं रखना कुछ गलत नहीं, लेकिन परेशान होना गलत है। अगर आप में क्षमता है तो आप अपने अंदर ऐसे गुण पैदा कीजिए कि आप अपने सपने को साकार कर सकें। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जब तक आपका ये विश्वास आपके ऊपर है तब तक आप जीत सकते हैं। और जिस दिन ये विश्वास हटा उस दिन समझ लेना कि आपकी आत्मा थक गई है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि थको मत। स्वामी विवेकानंद कहते हैं फिर उठो और विचार करो और फिर मेहनत करो, कभी ना कभी ये सफलता जरूर ही तुम्हारे पास आएगी। मनुष्य को कभी अपना सम्मान नहीं खोना चाहिए, और सम्मान मिलता है संस्कारों से। आज के समय के लोगों में संस्कार बहुत कम है, क्योंकि शायद वह अपने आप को अपनी सीमाओं में नहीं बांध पाते, लिहाज को लिहाज नहीं समझ पाते। हो सकता है ये बातें सिर्फ आपके लिए महज बातें ही हों, लेकिन ये एक समय के साथ आपको अपने जीवन में प्रमाण के रूप में दिखाई देंगी। आज की पीढ़ी जिस तरह बहुत ही जल्दी नाराज व क्रोधित हो जाती है, कुछ ही पलों में बड़े का सम्मान खो देती है। इससे पता चलता है कि वे किस मनोस्थिति से आ रहे हैं। हमारे देश को आज खोए हुए समझ की जरूरत है, और उसे फिर से जागरूक करना होगा हमें। हमारे माँ बाप जो शायद हमसे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, आज हमारे सपनों को, या फिर ये कहें कि उनके खुद के सपनों को साकार करने के लिए वो हमें बड़े बड़े कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिससे कि हम कुछ पढ़े और कुछ बने और उनकी तरह ना रह पाए।
तो इन सपनों को भी हमें ही साकार करना होगा। हमारे माता पिता की सोच को, समझ को हमें अपने अंदर लेकर आगे बढ़ना होगा और विश्वास रखना होगा कि हाँ, अगर दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अर्थात हमें अपने आत्मविश्वास को अपने अंदर रूबरू बनाना होगा और आगे चलना होगा। मैं अंततः आपसे यही कहना चाहूंगी कि 21वीं सदी के साथ ढलते हुए मॉडर्न जमाने में जरूरी है कि हम जो त्रुटियां हमारे देश में आज भी पड़ रही हैं, जैसे जातिवाद, धर्मवाद, इन त्रुटियों को हमें स्वामी विवेकानंदा के कहते हुए हमें उनके साथ चलते हुए इन त्रुटियों को समय के साथ निकालना होगा। और मुझे भरोसा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसमें क्षमता है कुछ भी कर दिखाने की, वह एक ना एक दिन इन चीजों को हमारे देश से दूर ले ही जाएगी। धन्यवाद। Thank you, Ayushi. Let's call our next student, Deep Joshi. Over to you, Deep. A very good afternoon to one and all present here. Today, Deep Joshi, a student of DME Media School, first year, is going to present a speech in front of all of you on this beautiful occasion of the National Youth Day and Swami Vivekananda Jayanti. But first of all, I would like to tell you all about that how this day came into origin and who is Swami Vivekananda. Celebrated every year on 12th January, the National Youth Day is celebrated in the memory of the Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born on 12th January 1863 into a Bengali Kayastha family in Calcutta. Swami Vivekananda was inclined towards spirituality and was influenced by his guru Ramkrishna, from whom he learned that all the living beings were an embodiment of the divine self. Therefore, the service to God can only be rendered by service to the mankind. After the death of his guru, Swami Vivekananda toured to the various parts of the Indian subcontinent to acquire knowledge about the conditions prevailing in the British India. He later traveled to the United States, representing India at the 1893 Parliament of the World's Religion. In his life, Vivekananda conducted hundreds of public and private lectures and classes disseminating tenets of Hindu philosophy in the United States, England, and in Europe. In India, the Swami Vivekananda is regarded as a patriotic saint. While understanding and popularizing the standards of Hindu thoughts, mostly classical yoga and Vedanta, Vivekananda was also influenced by the universal ideas such as the universalism. His initial beliefs were shaped by the Brahmo concept, which implied the belief in a formless God. He propagated the idea that the divine, the absolute, exists within all human beings regardless of their social status, and that seeing the divine as the essence of others will promote love and social harmony. Since the philosophy of Swamigini and the ideals for which Swami Vivekananda lived and worked could be a greater source of inspiration to the modern youth, on 12th January 1984, the Government of India declared this day as the National Youth Day. On 12th January 2013, the former Indian Prime Minister Manmohan Singh told in his address at the inauguration of 4-year-long celebrations of Swami Vivekananda's 150th birth anniversary that what Gandhiji said captured the great importance of spreading Swami Vivekananda's ideas and ideals among the youth in our country today. He personified the eternal energy of the youth and their restless quest for the truth. I would now like to tell you all that how this day is celebrated in India. Every year, on 12th January, in all the schools and colleges of India, this day is celebrated with processions, speeches, music, youth convergence, seminars, yoganas, presentations, competitions in essay writings, reincarnation, and sports. It is also celebrated in many parts of the Ramakrishna Mutt, Ramakrishna Mission, and their branches with great enthusiasm and joy. A great Mangalarati, devotional songs, meditation, religious speech, Sandhya Aarti, etc. are also performed on this day. To inspire the youth of India
The writings and lectures of Swami Vivekananda are also presented in schools and colleges on this day. Several competitions are also performed not only in India but also outside the country to promote education, trust among youths, etc., to make the country develop on this day. Also, every year from 12th to 16th January, the National Youth Festival is celebrated in our country. With this, I would like to end my speech and thank to all of those who gave their precious time to attend this session. Thank you. What Gandhiji captures the great importance of spreading Swami Vivekananda's idea and ideals among the youth in our country today. Well said. With this thought, next student will be Sajal Mishra. And as Sajal is facing some network issues, I request the technical team to play her video. Namaste everyone, I am Sajal Mishra, a first year student of DME Media School. I am feeling pleasure to speak on this occasion of National Youth Day and celebrating birth anniversary of Swami Vivekananda, a great soul. So I would love to start with a very beautiful quote, that is, you can't believe in God if you can't believe in yourself. We have different perspectives and people see it in different understanding how they believe and how their thoughts are. But ultimately what Swami Vivekananda meant was your ultimate goal should be self-realization and self-understanding. And apart from being materialistic and adding your emotions to materialistic things, the ultimate goal is to look into yourself, because if you are not aware of yourself, you can't believe in yourself. His life stories teaches us the difference between superstition and conviction. That is, in Hindi we say Vishwas and Andhvishwas. I would love to share an incident from his life that can give a great insight to all of us. So it was the time of 1900 and month of December when he was coming back to India from Europe after doing all his great activities, all the great deeds, doing social reforms, social and cultural reforms, and spreading the word of Hinduism, spreading the positivity and greatness of Hinduism to all over the world. He was coming back to India, but he didn't utter anything about his arrival to any of his known or anybody else, because if he will do so, everybody will be busy for his grand welcome and everybody will be just occupied by doing such activities. And he used to believe that all that time should be used in doing some productive work, that celebration and anything like that meant nothing. Instead, they can use the time and do something productive and something for development. And if we compare this situation to these days, we all are just credit seekers. We want credit for everything we do, and we should have, but sometimes we go blind for this and we don't value on the word value, we just run for valuation. So this can be learned from this simple incident, and we can imagine the simplicity of him, and this thing should be owned by this time of youth. Sharing to more learnings from his life, भगवान भी उनकी मदद नहीं करते जो खुद की मदद नहीं करते हैं. And next, that is very famous one, arise, awake, and stop not until it's reached. And yes, this topic of speech, that is National Youth Day, a reminder for conviction of youth. It is correct, because we should own all the principles of Swami Vivekananda to make our tomorrow better. Thank you so much for lending your ears. You can't believe in God until you believe in yourself. Thank you, Sajal. Indeed, Youth Day remembers and believe in Swami Vivekananda. All the performances were very interesting, and I hope everyone present here would have learned something from the quotes given by the students. Talk to yourself once in a day.
Otherwise, you may miss meeting an intelligent person in this world, said Swami Vivekananda Ji. Swami Vivekananda Ji said such words long time ago, and his words are valid even today. According to psychology, people who talk to themselves turn out to be the most intelligent people. Moving further, we have a special guest with us, Swami Vedatitananda Ji, and we are eager to listen to you, sir. But before, let me introduce a special guest. Swami Vedatitananda is a monk of Ramkrishna order of monks. He joined the order in 1999 at a tribal center in Pompat, Korg district, Karnataka. An initiated disciple of most revered Swami Ranganathananda Ji Maharaj. He ordained into sannyas in 2008 by most revered Swami Atmastha Anandaji Maharaj. He served in Belgaum Ramkrishna Mission and along Ramkrishna Mission School before coming to Ramkrishna Mission Shilpamamdira, Belur Math. He is now in charge of Polytechnic College and a Skill Development Center at Shilpamamdira since 2013. I welcome you, sir, and we are eager to hear from you. Over to you, sir. Thank you very much. Thank you very, very much. I hope I am audible. Some of you just give me a hit. Yes, thank you. Thank you. Professor Ambrish Saxena, thank you very much for having me here online. It's a very interesting connection. Professor Ujjwal Chaudhary happens to be a very close friend of Professor Saxena. Now, Professor Ujjwal Chaudhary passed from a school. He studied in a school where I was principal before coming to Belur Math. That is the name that they said along. It is in Arunachal Pradesh. So I learned Hindi when I was in the Northeast. I was listening to these students, such fantastic Hindi. The Hindi is so beautiful. I want to keep on listening to this beautiful way in which you can speak. हम भी हिंदी में बात करेंगे, लेकिन हमारा हिंदी सुन के ना आप लोग बहुत हंसेंगे. Because we have a very peculiar way of speaking Hindi in the Northeast. हम लोगों का हिंदी, we are not bothered about the gender, this one that you take, sensitivity that you have. हमारा हिंदी अच्छा रहता है. आप लोगों का हिंदी अच्छी रहती है, ठीक ना? So that is the way. So once in a while, I'll try to speak in Hindi so that I can reach across to all the students. I am sorry that we have to be online today. It should have been offline, but then the fun is, if it were offline, I would not have been able to present before all of you. So there are some advantages, there are some disadvantages. Online, I have found one thing: communication is not very good, is not very clean. Supposing I could stand in front of you and I could look into your faces and your eyes, that communication would have been very, very effective, I feel. But then this is better than nothing. So today I will speak for about 15 minutes. Honey, 15 minutes should be okay? Okay. Yes, sir. So Swamiji's birthday, National Youth Day, is being celebrated. Now, who is this man, Swami Vivekananda? So I'll tell you a story. Just listen to this. एक बार क्या हुआ, एक आदमी एक पेट शॉप में गया. पेट शॉप, जहां पे ये पेट्स मिलता है ना, चिड़िया, कुकुर, देन कैट्स, ये सब मिलता है ना, ये उस दुकान में गया है. दुकान में जाके पूछा हो, अच्छा, आई वांट अ बर्ड विच कैन स्पीक. यू नो देयर आर बर्ड्स विच कैन स्पीक. मैना वगैरह जो रहता है, दे कैन स्पीक. बात करने वाला चिड़िया है तुम्हारे पास? तो दुकानदार बोला, हाँ है तो सर, ये देखिए, ये वाला जो चिड़िया है, इसका दाम 10,000 है. ये बोलता है 10,000? एक चिड़िया का दाम 10,000? बोला हाँ 10,000. और ये कुछ भी नहीं है, वो वाला जो चिड़िया है ना, उसका 15,000 है. तो ये पूछता है कि 15,000 क्यों? तो बोलता है वो बात कर सकता है और वो लैपटॉप चला सकता है. वो देन समथिंग गुड. ये भी नहीं, वो 25,000 वाला की चिड़िया भी है मेरे पास. 25,000 वाला क्या कर सकता है यार? वो बात कर सकता है, वो लैपटॉप चला सकता है और C++ में प्रोग्रामिंग कर सकता है. नेचुरली इट्स कॉस्ट इज मोर. और लास्ट में एक चिड़िया है, वो चिड़िया का दाम 50,000 है, 50,000. तो ये आदमी पूछता है दुकानदार को, ये क्या करता है यार? तो दुकानदार बोलता है, सर वो चिड़िया क्या करता है हमें भी आज तक मालूम नहीं पड़ा,
लेकिन ये सब लोग जो है ना उसको बॉस बोल के बुलाते हैं, गुरु बोल के बुलाते हैं। सो ये विवेकानंद एक्चुअली है कौन? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट देन all the great people that this country has seen, Mahatma Gandhi ji, Netaji Subhash Chandra Bose, you name them, you name any person who is of any value in this country, he gets inspired from this man. That is one way of identifying or understanding this personality. What exactly is he? हम तो इतना साल बिता दिए यार इनको समझने में, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया ये है कौन. But then by inference, by this kind of analogy, I sort of get an idea. This must be something extremely big. I was very keenly listening to the lectures that these boys gave, the small speeches that these boys and girls gave. Amazing collation of ideas you had. I will just place one wonderful idea of Swami Ji before you, and I'll try to explain it very briefly. You see, this man once said, for this country, for India, what we need is Western science coupled with Vedanta, with Brahmacharya as the guiding motto, and Shraddha or faith in oneself. हम रिपीट करते देखिए, हमारा देश के लिए क्या चाहिए? What do we need in this country? So he says, we need 4 things. One is Western science. What we need is Western science, coupled with Vedanta, with Brahmacharya as the guiding motto, and Shraddha or faith in oneself. 4 चीज चाहिए बोल के स्वामी जी बोले हमारा, हम लोगों को. वेस्टर्न साइंस क्या है? ये कुछ बच्चे बोल रहे थे. Some of the students pointed, I think Joy Siro he also pointed it out. So we should join together and work. We are all very good when we work independently. समझ में है ना? 4 लोग मिल जाने से 5 पार्टी बना देते हैं हम लोग. 5 लोग मिल जाने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाता है हम लोगों का. You understand? Joint effort. We have to learn that from the West. Westerners are experts in joint work. समझ में है ना? So Western science stands for conjoint effort. Western science also stands for rationality, rational thought. उल्टा पुल्टा सोचना, emotionally क्या conclude करके बैठना. This won't work. There is something called rational thought. You all must be getting exposed. तुम लोगों का studies में वगैरह there must be some analysis on what is meant by rational thinking. So there's a process of thinking. समझ में है ना? There is a process of thinking. So that has 5 principles. At least 5 principles are there. Thinking has to be with 5 principles. So there is something called Occam's razor. You can make a note of all these things and study it later on. Occam's razor. If you have 2 explanations for one phenomenon, which explanation will we accept as correct? That explanation which has the least amount of assumptions. That explanation which has the least amount of assumptions. So apple ऊपर से गिरता है, पेड़ से एप्पल गिरता है. एप्पल क्यों गिरता है? I can give you an explanation. एप्पल पेड़ का ऊपर एक भूत रहता है, और भूत का काम है बीच बीच में एप्पल को नीचे गिरा देना. No, I cannot prove this, nor can you disprove this. So this therefore stands as an explanation. Shall we accept it? So that explanation has to be accepted, where the explanation comes from within the situation. अभी देखिए एप्पल क्यों गिरता है बोल के एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरा एक चीज को लेके आया उधर, भूत. अभी 1000 प्रश्न उठेगा भूत का ऊपर. ये भूत लड़का है ना लड़की है? वो एक पेड़ में रहता है ना, सब पेड़ में रहता है? एक पेड़ में अलग अलग भूत रहता है ना? एक ही भूत चारों तरफ में? वो क्या नेशनल बाउंड्री से क्या उसका? 1000 प्रश्न उठता है. हम क्या एक्सप्लेन करने के लिए गए हैं, और आई मेड इट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. So there is a simplification. There is this principle is called the principle of Occam's razor, the principle of parsimony. Each type there are 5 principles are there. Thinking has to follow these 5 principles. The second one is the cause is always present within the effect. This is another principle. Entire Western science is based on these 5 principles. Cause is always present within the effect. मैथमेटिक्स में मार्क्स कम क्यों हुआ यार? मैथमेटिक्स में मार्क्स कम क्यों हुआ?
So the answer that most children will give is, teacher अच्छे से नहीं पढ़ाया ना. You see this? Whereas तेरा marks कम हुआ because तुम पढ़ाई नहीं किया यार. So the cause is present within the effect. You don't have to bring in the cause from somewhere else. So this kind of thinking, Western science is very essential. Then Vedanta is required. Vedanta माने क्या? Vedanta माने तेरा बारे में कौन सोच रहा है यार? Western science can give you huge amount of information about this world. Anything that you want in this world, miracles after miracles they are able to produce based on rational thought. Based on rational thought. But what about you? Who are you? So how to control you? What are you actually? आदमी का दाम क्या है? औरत का दाम क्या है? What is the value? So what brings value to a human being? These ideas are there in Vedanta. They talk about me. They talk about me. समझ में आया ना? So that is required. That is very much required because pure Western education, pure Western thought is killing us. Depression. Marks थोड़ा कम आ गया और ये लटक जाता है उधर. He hangs himself. We see this on a regular basis. Whenever your exam results are out, people kill themselves. कोई एक लड़का का एक लड़की है, एक फ्रेंड है उसका, और वो लड़की दूसरा कोई लड़का का साथ फोटो कर दिया तो he will go and kill himself. So these are all happening. That is because we have a very, very shallow idea of who we are. Vedanta can give that to you. Take it. These two things. The third one is brahmacharya. ब्रह्मचर्या बोलने से ही लोग भाग जाते हैं. अरे ये तो सन्यास का धंधा शुरू कर दिया है, सब कुछ छोड़ देने का है. सब कुछ छोड़ दिया तो जिंदगी में रहा क्या यार? सब साधु बन जाएंगे क्या? सोचो तो तुम, सब साधु बन जाएंगे. सब छोड़ना मुमकिन है क्या? So brahmacharya is a very interesting thing. It is the science of controlling one's own energies. It is the science of controlling one's own energies. Some of you may have heard of a person called Walter Mitchell. Walter Mitchell was a very famous psychologist. 1960s में अमेरिका में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वो साइकोलॉजिस्ट था. और वो एक एक्सपेरिमेंट किया. उसका दो छोटे छोटे बच्चे थे, लड़की थे उसका, दो लड़कियां थी. So वो लड़कियां वो स्कूल में पढ़ती थी. कौन सा? वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ना कोई एक यूनिवर्सिटी में था वो. उसका एक किंडरगार्टन स्कूल में वो दोनों बच्चे पढ़ते थे. तो ये क्या किया, अपना सब लड़कियों का बंधु लोगों को, 10 बंधु को, 10 लड़की को एक रूम में जमा किया और एक एक बच्चे का सामने एक एक मार्शमैलो रखा. मार्शमैलो माने वो सोसाइटी में मार्शमैलो, हम लोगों को सोसाइटी में तुम किटकैट चॉकलेट बोल के सोच सकते हो. तुम किटकैट चॉकलेट बच्चे बहुत पसंद करते थे उसको. एक किटकैट चॉकलेट रखा और बच्चा को बोला, हो हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जाके वापस आएंगे, 5 मिनट लगेगा मेरा. तू 5 मिनट तक यदि इसको नहीं खाया, मैं तेरे को 2 किटकैट दूंगा. अब समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? और वहां पे एक कैमरा लगा के उसका रिएक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये यूट्यूब में मिलेगा आपको, वॉल्टर मिचेल का मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट का. यू विल फाइंड द रिएक्शंस ऑफ दोस चिल्ड्रन. एक एक बच्चे का रिएक्शन अद्भुत. कुछ बच्चे थे ये बोल के रूम से बाहर जाने का पहले खा लिए, कंट्रोल ही नहीं कर पाए अपने आप. कोई बच्चे थे जो एकदम हाथ ऐसे पकड़ के दूसरा तरफ देखना शुरू किए, बिकॉज उसको देखने से ही खाने का मन होता है, और फिर कहां से कंट्रोल करेंगे अपने को. और कुछ बच्चे हैं, वो रिकॉर्डिंग में है, वो किटकैट को लेके, मार्शमैलो को लेके, मार्शमैलो सफेद सफेद रहता है, समझे ना, मार्शमैलो को लेके जस्ट जीभ में रख के वापस रख देते. हम खाएंगे नहीं लेकिन टेस्ट करेंगे है क्या चीज. बस दिस इज नॉट द एक्सपेरिमेंट. द एक्सपेरिमेंट इज, अपना 2 लड़की थे ना उधर, वो लड़कियां बड़े हो गए. अभी बड़े होके 25 साल के बाद घर में बात कर रहे हैं दोनों लड़कियां. अरे जैसे आप लोग भी करते हैं, अरे वो लड़का ना, वो लड़का अभी ये कर रहा है, अभी ये लड़की ना इसको शादी किया, ये कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है. इस टाइप का बातचीत चल रहा है. तब ये वॉल्टर मिचेल बोला, अरे यार वही बच्चे थे जिसको मैं स्टडी किया था, उसका वो एक्सपेरिमेंट किया था मैं. प्रत्येक बच्चे का फ्यूचर वो कोरिलेट किया. द कोरिलेशन वाज अमेजिंग. एवरी चाइल्ड who could control itself from not eating
had very high educational qualifications, had very high paying salaries, had very stable married life. And those of the students who could simply not control themselves, they could not complete education, they could not hold on to a job, they never had stable relationships, human relationships. शादियां हो जाता है, टूट जाता है. And those other students, you see, who could not control themselves and who did not also fall, some of them went this side, some of them went that side. This is brahmacharya. So can you control yourself right now so that you can achieve something more important later? Who is giving you this training? Nobody is giving you this training. That is why it is required. That is why it is required. Brahmacharya and Shraddha. Shraddha is something which is amazing. Shraddha means your faith in oneself. जय सिरोही एक लड़का है इधर, हम यदि उसको गाली दे दिए सबका सामने, वो तो गुस्सा हो जाएगा. अरे हाउ कुड यू स्कोल्ड मी स्वामी जी, व्हाई डिड यू स्कोल्ड मी. हम उसको बोले तू तो यूजलेस फेलो यार, हम बोल देने से बहुत गुस्सा हो जाएगा. बट यू नो द फन, तुम जब रात में अकेले जब पढ़ते रहते हो ना, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में है, अब तो सिंपल सब्जेक्ट्स रहेगा, बड़ा सेमेस्टर में जाओगे तो और भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स रहेगा. उस समय में जब तुम किताब खोलते हो ना, तब अपने आप से तो बोल रहा है ना, ये मेरे से नहीं होगा. दूसरे बोलने से तो तू चिल्लाता है. अपने आप से जो बोल रहा है तुम, all of us do this. That is Shraddha, the lack of Shraddha. You understand? That is required. Shashank, बात समझ में आ रहा है तो? So, what is this Shraddha? Everybody has got quite a sufficient self-esteem. So, Tulsi, समझ में आ रहा है तो? We have sufficient self-esteem. दूसरे लोग बोलने से हम लोग उठ जाते हैं, अरे how can you talk like this? लेकिन अपने आप को तो तू बोल रहा है यार, बहुत बार बोला है तू, और भी बहुत बार बोलने वाला है तू. Take care of that. So these four things are most essential. What we need is Western science. Be rational. No help will come to you from anywhere. No help will come to you from anywhere. Remember this. There is nobody to help you. You are all the help there is. समझ में है ना? Rationality and Vedanta. You are not insignificant. There is value within human beings. Let us learn to value human beings. You know how it is? Jay? If I value myself, that is when I can value you. It never happens the other way around. एक आदमी दूसरा आदमी को वैल्यू कब करेगा यार? जब खुद का वैल्यू ठीक से समझ में आता है ना, तब वो दूसरा आदमी को वैल्यू करेगा. That comes only from Vedanta, because Western science is not able to give it to us. Western science says that you are a piece of carbon. What are you? What are human beings? We have evolved from carbon, hydrocarbons. What is the value of hydrocarbon? So तेरा और एक कैन पेट्रोल में क्या फर्क पड़ा यार मेरे को? समझ में आ रहा? वो भी तो हाइड्रोकार्बन है, तू भी तो हाइड्रोकार्बन है. हाँ, तू तो इधर मुंडी हिलाता है बस, यही तो फर्क है. समझ में आ रहा? Whereas now there is something much more valuable within a human being. There is something called consciousness here. Consciousness cannot be reduced to matter. That Vedanta alone tells you. Then we must teach ourselves how to control our energies. Energy control is not a part of modern education. Shashank, Tulsi, Kushi. Energy control is not a part of modern education. Emotions go out of control. There is no teaching for that. Whereas ancient India always believed that education has to train the prana. There is something called life force. Prana has to be trained. So कैसे ट्रेनिंग करना है इसको? Oh, सब बहुत चीज है. वो सब if you dive into this, you will slowly get more and more details. And the last one is Shraddha. So never ever tell yourself that you are not up to the mark, that you are not good. We do that. जब तू बोलता है ना, अपने आप को जब बोलता है ना, दूसरा कोई समझ में नहीं आता है उसको. None of us are there. The moment you are in front of others, you put up a very, very wonderful face. I am very brave. I am the one of the best. लेकिन खुद को तू
You keep on cheating yourself. So take care of these 4 things. I am so happy that I was able to speak to some of you all today. So if there are any questions, I think that is the plan. Honey? Yes, there are so many questions in the chat box, sir. Chat box. Yes, I'll help you. I'll read out the question. Kalidas is asking you, sir, what is one advice you would give to us youth while we face economic and social insecurities? Love working hard. This is the one advice I will give you. Love working hard. Most of us have problems. Most of us look for shortcut solutions. Shortcut solutions. समझ में है ना? तो I remember one cartoon. Calvin and Hobbes बोल के एक cartoon है. Bill Watterson used to write that. It's one of my favorite cartoons. So वहाँ पे ये Calvin is a small boy, very brilliant boy, like you students, brilliant fellow. This fellow goes to his father and says, "Papa, I have decided to be a millionaire." Oh, कौन पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा यार, मेरा लड़का millionaire होने के लिए आशा रखा है. He says, "Oh, very good, very good." Then the boy says, "Start working hard." बोल के पिताजी को बोलता है. पिताजी सोचता है, मैं क्यों करूं? तू ही तो millionaire बनेगा, तब तो हम उसको मिलेंगे ना. That is not the way out. We all look for shortcuts. We have good hopes. We have good dreams. कोई दे देने से मेरे को बहुत बढ़िया लगे. समझ में है ना? So the only way, the only protection that we have, no God protects you. No God protects you. समझ में है ना? No fate protects you. Astrology, सब कुछ है यार. हाँ, 10 उंगली में 10 तो ये लगाएंगे, क्या नाम उसका? रिंग्स, अंगठी लगा देंगे ये लोग. समझ में है ना? Nothing is going to happen. Whereas if you can work hard, a hard working man will make money. He will lose money also, because that is the nature of money. The nature of money is you get some, you lose some. But having lost, you will never keep quiet. You will again build it. You will build much more than what you lost. Then again you will lose that entire bloody thing. Then again you will keep working and you will get much more than that. That is how it works. My one advice for all of you is, if you ask me, whatever be your problem, work hard. Have faith that you can can solve it by working. Then there are many more things. Can you differentiate between passion, ambition, and aspiration? I refer you to the Oxford Dictionary. They give you wonderful meanings about it. Otherwise, all three are very important. They mean the same thing. When you come to your personal life, there is no difference between them. Whereas English language, certain semantics will be there, certain small changes in the meaning will be there. As mass communication and journalism students, for you those differences in meanings will be very important. But I speak from your personal life's point of view. A passionate boy, a passionate girl, an ambitious boy, an ambitious girl, and an aspirational boy and an aspirational girl. There's absolutely no difference. So there is also one more question. Yes, ma'am. Naitik is asking, where does spirituality end and science start? Where does spirituality end and science start? I can tell you something like this. Science is much more pervasive than spirituality. That is what my study of Vivekananda has taught me. Science is much more. So you had studied something about sect, subsect, sects, groups, subgroups. So if you consider groups, then science is the larger group and spirituality is a part of it. So you won't lose anything by not having spirituality. You understand? Your daily life will be very comfortable if only you can be rational. Rationality can solve most problems in daily life, most problems. But then there is one problem which cannot be solved by rationality. There is one problem that cannot be solved by rationality. That problem is the question, who am I? मैं कौन हूं यार? मैं कौन हूं? So now any other thing, supposing you're hungry now, I can give you 100 ways of satisfying your hunger. तुम वो फोन करके जोमेटो जा है तुम्हारा, उसका भी कर सकते हो. तुम होटल में फोन कर सकते हो, होटल चले जा सकते हो, तुम एक ऑटो बुला के या टैक्सी बुला के होटल जा सकते हो, घर में आग लगा के तू कर सकते हो. बहुत 100 ways of solving any problem. You have fever,
You have cold. What is the number of medicines that you have? You understand? What is it that you lack? I can solve it for you. There is only one issue which cannot be solved by science. Why? Why it cannot be solved by science? It cannot be solved by science because science has to do with visible entities. You must be able to observe it. You must be able to measure it. Quantifiable यदि नहीं है, then it is not science. Easily, there's a lot of argument, there's a lot of debate still going on whether social sciences can actually be called a science. That is because it is not quantifiable. Yes, it can be called a science because it follows rational thought. The principles of rationality are honored. Therefore, it can be called a social science. But science has to do with measurement. Science has to do with the mathematical operations. समझ में है ना? I am one. There is only one thing in this entire world which cannot be observed. I cannot observe myself. I can observe you. I can observe you. I can observe Shruti madam here. I can observe Hani. I can observe you all. But that doesn't tell me anything about it. समझ में है ना? So I spoke with you for half an hour. तू कहाँ से आता है, तेरा घर क्या है, तेरा माँ बाप क्या करते हैं, तू क्या करना चाहते हैं, बहुत कुछ समझ लिया तेरा बारे में. Do you think I know you? I know about you. That's a very little. Be the subject. That is the whole fun. You are already that. समझ में है ना? So that is where spirituality. That is the whole. Accept this. However, science offload this topic spirituality. That is what has actually happened. Very interesting. Very interesting. You people belong to mass communication and journalism department. समझ में है ना? अभी तेरा कॉलेज चलाना है, करवाना है. Now these professors who are there here, now they will teach you very well. You have any doubts, they will clarify. All those things are there. But then you are stuck in some registration process. तुम लोगों का यूनिवर्सिटी रहता है ना, वहां पे कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना है तेरे, कुछ डॉक्यूमेंट देना है, कुछ पेपर देना है, बहुत सारा रेड टेपिज्म रहता है उधर. None of these professors can help you there. Whereas your professors can say, we have offloaded this work to the administrative block. You understand this? But the central issue here is the teaching. So the department is central for you. एक सिर्फ एक ऑफिस रख के तू करेगा क्या यार? समझ में ना? The college is the department, the college is the classroom, the college is the laboratory. Everything else can add. So science is fundamental and religion is a part of it. Religion has to be scientific therefore. आज science और religion झगड़ा क्यों करते हैं? The reason is because spirituality का नाम पे सब कुछ अंडशन चलता है उधर. समझ में ना? There is absolutely no reason, there is no rhyme, there is no rationality. So XYZ को ईश्वर है बोल के तेरे को बिलीव करना पड़ेगा. उसका पिन कोड क्या है, वो कहाँ रहता है, nobody knows. और प्रश्न करने से तेरे को हम दूर रख देंगे. We don't like you that you question too much. These things is not actually acceptable to science. So can you give us a religion which is rational? Can you give us a religion which is rational? Science is hunger, when it's dying out of hunger for such a religion. Vedanta is such a religion. Try to find that out. So I will not tell everything today. एक ही दिन में सब कुछ हो जाने से तुम लोग मेरे को दोबारा नहीं बुलाओगे ना. I'll give my advertisement and Indeed. There are many questions still coming in the chat box. So Sakshi Mishra is asking, what do you feel the most excitement or effective learning environment would be? What do you feel the most exciting or effective learning environment would be? See, I am an old person, so I have my own old thoughts. समझ में है ना? मेरा thoughts आप लोगों को समझ में आएंगे कि नहीं, अच्छा लगेगा नहीं, मुझे मालूम नहीं. For me, the most exciting or effective learning. That second. Just 1 second. Hang on for a second. Yes. Okay, sure. 7344 9190.
So for me, the most exciting and effective learning environment is when the teacher is super excited about the subject. समझ में आया? I burn passionately for this subject, and my student is hungry to know. 4 दिन नहीं खाना यार, hungry तुम लोग तो मॉडर्न बच्चे हो, तुम लोगों को हंगर क्या है मालूम ही नहीं है तुम लोगों को, समझ में आया ना? 3 दिन नहीं खाना है, वो एक स्टेट है. I must know. So that now when these two type of people meet ना, अब्बा टीचर का भी क्या आनंद है यार और स्टूडेंट का भी क्या आनंद है जानते हो. And for me that is the most effective or exciting environment for learning. So it doesn't matter to me whether it is in say your Delhi, whether it's in Calcutta for me here, or whether it's in a room, or whether it's in a corridor while walking. I don't care. Those things don't matter to me. What matters to me is, are we talking about a subject that I am bloody passionate about? And are we talking about a student, a boy or a girl, who really, really wants to know? That is for me the most this one. Tarpar, uske baad kya hai? Khushi, you want to ask? You had raised your hand. हाँ जी मैम, मेरे को कुछ पूछना था सर से. बोलो भाई, बोलो. सर पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और हमें इतना कुछ बताने के लिए लाइफ के बारे में और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हम बताने के लिए. सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कोविड हम लोग देख रहे, कोविड की वजह से आजकल हम लोग सब घर पे ही रहते हैं ऑलमोस्ट टाइम. तो सर आप घर पे रहते हैं तो हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं. तो सर ऐसे हम इन सबको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अगर आप कुछ इस पे प्रकाश डाल सके तो. देखो खुशी, घर पे रह रहा है ठीक. We are bound to stay inside the house because I saw there are 2-3 students here coughing. I saw them coughing. हाँ ऐसा कर रहे हैं. I am so happy that I am outside in this across this computer here. I would not have wanted to be on the same room. समझ में है ना? So मेरा भी थोड़ा सा इधर उधर सर्दी हो रहा है. So I don't know how comfortable you people would have been to be in the same room with me. Your negative thoughts have nothing to do with that situation that you are at home. Remember this. So the moment you get negative thought, go out. Supposing I tell you the solution is to go out, where will you will die? You better stay at home. So at least with your negative thought, you will live. It's a prioritizing. So right now, social interactions, physical social interactions must be kept to a minimum. Common sense. Negative thoughts are a very interesting state of affairs. Negative thoughts are something that we develop. So we nurture it. एक आदमी ट्रेन में जा रहा था. So रात में सोएगा, कल सुबह उठ के जहां पे वो उतरेगा ना, वहां पे उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग है. So he must get a very good sleep tonight. तो सब प्लान करके बैठा है. तो अभी सोएगा वो. ऐसे सोया, ऊपर बर्थ में, अपर बर्थ में देयर इज अनदर पर्सन. वो काव क्या वो मरमरिंग कर रहा है. तो ये उठ के सुना, ये क्या है यार, अभी ये सारा रात चला तो मेरे को तो नींद नहीं आएगा और कल सुबह तो हम काम नहीं कर पाएंगे. वो सुना, वहां पे जो आदमी था ना, वो बोल रहा है, अरे कितना प्यास लग रहा है यार मेरे को, आई एम सो थर्स्टी, आई मे डाई आउट ऑफ थर्स्ट. यही चीज बोल के ही जा रहा है. इसको समझ में आया, ये इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करने से मेरा रात गया आज. तो क्या किया, नेक्स्ट स्टेशन में उतर के 4 लीटर 2 बॉटल खरीद लिया. अपना पैसा से खरीद के उसको दे दिया, आप ले लो इसको, आप पी लो और सो जाओ, मेरे को सोना है. होगा तो बहुत थैंक्स दिया हो, सो गया हो. और 15 मिनट के बाद फिर काव. अब क्या हो रहा है यार? तो अब सुन रहे हो, वो आदमी बोल रहा है, कितना प्यासा था मैं, कोई मेरे को हेल्प नहीं किया, ये आदमी मेरे को हेल्प. सो दिस इज अ लाइन ऑफ थिंकिंग, दिस इज अ थिंकिंग हैबिट दैट वी डेवलप. नेगेटिविटी इज थिंकिंग हैबिट. समझ में है ना? सो वी मेक ए हैबिट आउट ऑफ दिस. व्हाट इज द वे आउट फॉर दिस? अनदर हैबिट. So you must spend 5 minutes at least every day. We don't do these things. 5 minutes you should sit every day, at least in the morning or in the evening. और वहां पे बैठ के क्या तुम ईश्वर का चिंतन करो बोल रहा हूं मैं?
Absolutely not. You don't need to do those things. But 5 minutes sit down and ask yourself, find out, क्या चल रहा है यार मेरा मन में? मेरा मन में कल चल क्या रहा है बोलो तो? What is it that I'm thinking of? Marat bolan? আমি দেখছি মাঝে এক সেকেন্ড দাঁড়াও। 4686 0547. So what is it that I'm thinking about? Why do I always end up fighting with my mother? खुशी समझ में है ना? घर में तुम स्टडी करके देखो ना तुम छोटा. So almost every day there is one fight with your mother. So have you ever thought, what is this line of thinking that is ending up in this kind of a relationship? तू गुस्सा हो गया क्या खुशी? ऑफ कर दिया तुम. No sir, मैं गुस्सा I'm just नहीं giving you हूँ an example. I'm just giving you an example. You understand? So have you given thought? So there is something called metacognition. Are you aware of this term called metacognition? No sir. See, there was one student who asked me now, what is the best learning process? So there is some thinking that you people are doing on what gives us better learning. But you know what? One of the fundamental things that is essential in learning is how do you learn itself? So what is it that is happening within you when we say that you are learning? So there is a learning involved in this that is called metacognition. Do you know some of the best people in this world, some of the most influential people of this world have had no teachers? समझ में ना? वो लोग कॉलेज स्कूल ही नहीं गए यार, और गया वहां से भी फेल होके निकल गए हैं लोग. They learned on their own. They learned on their own. That is because something inside here or something inside here, something opened up and they started catching things. समझ में है? So negativity, you want to get out of negativity. First of all, you convince yourself that it is something negative. It is not negative, you know. There are the thinking habits that we have are never at fault. हम लोगों का मन में हमारा thinking habit कभी गलत बोल के समझ में नहीं आता है. लेकिन end में जाके जब conclusion आता है ना, अरे यार ये क्या हो गया ये? So negative thoughts, what do you mean by negative thoughts? Do you know what is contributing to these conclusions? It is the habit of thinking that you have made. समझ में आ रहा है ना? So negative thoughts. अभी तेरा डाउट होगा 2024 में हम लोग पास आउट हो जाएंगे. 2024 में जैसा चल रहा है हम लोगों को नौकरी मिलेगा क्या? हम लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई की है हम लोगों का डिग्री का कोई वैल्यू रहेगा क्या? So these are the things that may be creating some doubts in the mind. समझ में है कि नहीं? So I ask you one thing. So is there any college in this country where physical classes are happening? No. So if the condition is common all over the country, what is your problem? Think common sensically सोचो ना. तो सोचो आज रात तू सोया है और आज रात एक मैजिक हुआ, मैजिक दुनिया में. Everything has got reduced by one meter. You will never get to know. जानते हो तुम सुबह जब उठोगे, you will never know that the entire world has shrunk by 1 meter because all dimensions have shrunk by 1 meter. Everything is relative though. So common sensically सोचना. Whenever you find yourself in a troublesome situation, ask yourself, how are the others? How are the others? इस टाइप का सिचुएशन में बाकी लोग क्या किए हैं? कौन सा है तेरा दूसरा कॉलेज? कौन सा है यार बीजेएमसी कोर्स का आसपास में? कौन सा है अच्छा वाला कॉलेज? खुशी बताओ. हनी कोई एक कॉलेज का नाम बताओ ना तुम. वो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? So are they not in the same situation? No, if they are in the same situation, that means both of you have the same parameters and you will be competing with the same conditions. So it's never an issue. You understand this, Khushi? So negativity has nothing to do with staying at home. You please continue to stay at home till the government says it's safe. You understand? Yes, One yes. last Thank you so question much. we will take. Jay, you want to ask? Yes. स्वामी जी, जैसे आपने अभी बताया कंट्रोलिंग ऑफ एनर्जीज, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लाइक ह्यूमन रिलेशंस जैसे होते हैं, हर जगह कंफ्यूजन होता है. सो अगर कोई मतलब हमारी जनरेशन या बेसिकली मैं अपने पर्सनली देखता हूँ कि हम कंफ्यूज रहते हैं कोई दो लोगों के बीच में, एंड
उसकी वजह से जिसके साथ अभी प्रेजेंट में है उसके साथ रिलेशंस खराब होते हैं, और कि पास्ट का सोच के कि शायद वो वापस आएगा या आएंगे या जो भी है, और प्रेजेंट में जिनके साथ हम हैं उनके साथ एक्चुअली रिलेशन खराब हो रहे हैं। सो इस चीज को कैसे हटाएं, मतलब इतना कंफ्यूजन और ये सब कैसे कंट्रोल करें? See, there are two plates. There are two plates. Now, this plate is shaking. If this plate is also shaking, you will never be able to stabilize this system. In order to stabilize the system, one plate has to become fixed. If one plate becomes fixed, then this plate will understand, or you can explain to this plate, तू बहुत हिल रहा है यार, समझ में आ रहा है? हाँ, so if you can fix your priorities in life, fix your priorities in life. Don't keep on changing it. See, हम लोगों का समस्या क्या है? We are unable to fix our priorities. We are unable to fix our priorities. You fix your priorities. Then what happens is, ये दुनिया में तेरा आसपास में जितने भी लोग हैं ना, some of them will say, अरे यार जय सिरोही तो एक पागल है, हाँ, वो बहुत headstrong आदमी है, उससे बात करने से नहीं. They will go away. But there will be many people who will say, I like this man. We can deal with him. But then it is essential that you are, संस्कृत में एक शब्द है यार, हिंदी में भी इसका रुजुत्वा बोल के एक शब्द, रुजुत्वा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं. रुजुत्वा, दैट इज अ क्वालिटी. रुजुत्वा माने इंग्लिश में इट इज जनरली ट्रांसलेटेड एज राइटियसनेस. राइटियसनेस, राइटियसनेस एक्चुअली उसका मीनिंग नहीं है वो. रुजुत्वा इज इट इज अ वर्ड व्हिच सेज समथिंग व्हिच इज स्ट्रेट, व्हिच इज नॉट बेंट. गोल गोल चक्कर नहीं है यार, मन स्ट्रेट है वो. सो इस टाइप का आदमी से डील करना बहुत सुविधा होता है, समझ में है ना? सो इफ आई नो व्हाट आई वांट इन लाइफ, सो स्पेंड सम टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट यू वांट इन लाइफ, हैव अ क्लैरिटी ऑन दैट. सो देन व्हाट हैपेंस इज, देन इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू, आई डोंट वांट दिस person, I don't want that person. Say for example, today I had 2 more programs, 2 more invitations, समझ में है ना? 2 more invitations. Now I accepted your Professor Amrish Saxena's invitation because students are there, because my priorities are the students. समझ में है कि नहीं? Now if I have a doubt on that, shall I speak here? और यहाँ पे भी 2 संस्था में मेरे को एक इन्विटेशन था, वहां पे भी बात करूं, यहाँ पे भी बात करूं. नो, इतना कंफ्यूजन का बात ही नहीं है. So you find out what is it that you want. Once you are fixed, the entire world will adjust itself to you. That is very beautifully put, sir. Thank you, Shashank, you want to go ahead? यस मैम. Yes. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अक्सर वेद और वेदांतों को एक ही नजरिए से देखा जाता है, तो इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस है क्या? है, वेद और वेदांत में एक डिफरेंस है. सो वेद, इट इज ए कलेक्शन ऑफ mantras relating to all situations of life. समझ में है ना? सो आज तेरे को यदि नौकरी चाहिए, व्हाट इज द मेथड दैट वी आर फॉलोइंग? आज का सिस्टम है, आज दुनिया, सी ये दुनिया लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग सिस्टम फॉलो किया है शशांक, समझ में आ रहा है? सो आज का सिस्टम है, तो तेरे को एक नौकरी चाहिए तो एक अच्छा वाला डिग्री चाहिए, तेरे को अच्छा पढ़ाई करना चाहिए और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तेरे को क्रैक करना पड़ेगा. दिस इज द मेथड नाउ. लेकिन एक जमाना था इंडियन सोसाइटी में जहां जब जो भी तेरे को चाहता है, तू जो भी चाहते हो उसको पाने के लिए एक मंत्र है. एक सोसाइटी था यार इधर, आज वो सोसाइटी नहीं है. तो नाउ व्हाट हैपेंड वाज, इन दैट सिचुएशन all capable people came up with various mantras. So you want a son, एक लड़का चाहिए तेरे को, हाँ, तो लड़का पाने के लिए एक टाइप का मंत्र है. वो लड़के का ब्लू आईज होना चाहिए और
व्हाइट हेयर होना चाहिए, उसके लिए एक अलग मंत्र है. So Veda is a collection of all mantras. Now in the course of making all these discoveries, what happened was, every once in a while there was a person who made an amazing discovery about himself. समझ में ना? So one of the first rishis who spoke about himself was a rishi called Vamadeva. So his mantras tell Vedahametam Purusham Mahantam Adityavarnam Tamasah Parastat तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी नान्यः पंथा. इस टाइप का एक मंत्र है. वो बोलता है कि योसावसौ पुरुष सोहमस्मि. हाँ, सो ये जो ये पूरा दुनिया को सृष्टि किया है वो हम ही हैं बोल के बोला हो, उसका एक मंत्र था ये. समझ में है ना? और एक लड़की थी, अम्बृणी बोल के एक महर्षि था, महर्षि का एक लड़की थी, वाक बोल के उसका नाम है. वो एक मंत्र डिस्कवर किया, अहम रुद्रे भिर्वसुभिश्चराम यहमा आदित्य ऋत विश्वदे एवैः. तो जो भी दुनिया में चल रहा है वो हमसे चल रहा है. सो अपने बारे में डिस्कवरी है, मंत्र है. सोचो तुम, बाकी सब मंत्र किसका बारे में है? कुछ भी चीज पाने के लिए, एक बाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए तेरे को, हाँ, उसका एक मंत्र है. हाँ, एक घोड़ा चाहिए तेरे को, एक मंत्र है. कार चाहिए, मंत्र. सो there is one set of mantras to obtain anything that you want, and there is another set of mantras every once in a while only it is coming up about oneself. So abhi kya hua, ek situation ke baad people stopped recording the mantras relating to things, and they encouraged recording mantras relating to oneself only. अपने बारे में यदि कोई डिस्कवरी कर सकता है, मैं क्या हूं, मेरा मनस्थिति इस टाइप क्यों है, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, मैं उस टाइप कैसे बन सकता हूं, ये सब चीजों के बारे में यदि कोई डिस्कवर किया, then only those were recorded. So towards the end of the Vedas we have these recordings only. You don't have anything about how to become rich, how to live long. You don't have any such mantras there. Whereas in the beginning of the Vedas you have mantras about everything. You want to have a very good harvest, you want to have more rain, you don't want rain, so there is a mantra for everything that you want. Whereas then there is another set of people who are talking about themselves, how to be eternally happy, how to see. अपने लोग मर जाएंगे यार, अपना लोग जिसको हम पसंद करते हो तो मरते रहेंगे, फिर भी लेकिन मेरे को दुख नहीं होना, इस टाइप का स्थिति कैसे पाए, इसका बारे में डिस्कवरी है. तो all these discoveries started getting accumulated. That is the Vedanta. So the Vedanta literally speaks only about me, whereas the Vedas have all sorts of discussions. What is it that you want in life? You want to be a king, you want to rule, we have got a mantra for it. You understand? Okay. Shashank. Thank you. We have one Shruti, please close it now. It's 4:30 yes. already. Yes, Okay. ma'am. Yes, now I think there are many questions. You have to come again to solve everybody's queries. Hani Khurana, I hand over to you now to conclude the program. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, for your words. With this, we have come to the conclusion of today's program. Now I request Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to give her concluding remarks and also to announce the winners of both the competitions. Over to you, ma'am. Thank you. Today is very important day. We are grateful to Swami Vedatitananda ji, क्योंकि उन्होंने जितने इस तरह के से लोगों को एड्रेस किया, सब कुछ बहुत कुछ बताया. He was kind enough to listen to us, motivate our students, and provided us valuable input. Student Council Spark, basically ये student council है जिसमें इतने students participate कर रहे हैं और program भी किया है, लोगों ने competition भी किया. तो this is organization. और ये इवेंट इन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है. स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात कही है. बेसिकली स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर. ही वाज अ मैन ऑफ प्रोग्रेसिव थॉट्स. ही लेफ्ट द वर्ल्डली थिंग्स फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी. ही प्रैक्टिस्ड स्पिरिचुअलिज्म. He emphasized on the attainment of knowledge. जो भी हम बात करते हैं,
जैसे विवेकानंद जी ने कहा, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। तो हमें जो भी अभी स्वामी जी ने बताया कि आपको इतनी सारी चीजें, इतने सारे थॉट्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, और स्टूडेंट्स को सुना, स्टूडेंट्स की बातों को सुना, उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए, उसमें काफी चीजें ऑलरेडी कवर हुई हैं। लेकिन जो हम कहते हैं और जो स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि 3 अवस्थाओं से व्यक्ति को हर काम के लिए गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। मगर हम किस पर ध्यान देते हैं, किस चीज की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, किसको हम नजरअंदाज करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने अपनी पहचान बनानी है तो हमें अपने को उस तरह से मोबिलाइज करना पड़ेगा, अपने को उस तरह से देखना पड़ेगा। अगर हम उपहास देखते रहे तो ऑब्वियसली हम अपने को निर्बल फील करेंगे। लेकिन अगर हम उन सारी चीजों को निग्लेक्ट कर देंगे, उनको ध्यान नहीं देंगे, तो हम अपने को सबल भी बना सकते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसा मैं हमेशा वैसे भी कहती हूँ, नॉर्मली भी, कि अपनी आप आइडेंटिटी बनाइए, अपनी पहचान बनाइए, और पहचान बनाने के लिए उन सभी इम्पोर्टेंट बातों को सुनना, समझना पड़ेगा, नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, जैसा अभी स्वामी जी ने बोला। लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी जैसे बात होती है नॉर्मली कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, हम लोगों को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होता है अगर हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपके एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, जैसा अभी स्टार्टिंग में ही आपने बोला सर कि कम्युनिकेशन के लिए आपकी नॉडिंग, आपके एक्सप्रेशन, आपकी फीलिंग हमें अगर नजर आती है तो ऑनलाइन क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो हमें केवल ये रियलाइज करना है कि जो सिचुएशन है उससे हमें कैसे पार पाना है, उससे कैसे हमें आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। स्वामी वेदातितानंद जी ने जो बताया, जो इन बातों को एम्फसाइज किया, combination of Indian thoughts and the Western thought. He propagated rationally. He supported the spirit of teamwork. He talked about Vedanta and helped us in understanding Vedanta philosophy. So thank you, Swami ji. Thanks to all listeners. बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और आपने जैसे कहा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन अगर होता तो वाकई में बहुत अच्छा लगता। तो जरूर ये सारी सिचुएशन नॉर्मल हो तो हम आपका स्वागत करेंगे कि आप एक बार दिल्ली आएं और हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट के साथ में बातचीत करें, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उनका आंसर उन्हें नहीं मिल पाया है, और हमारा प्रोग्राम टाइमली शुरू होने के बाद भी 1.5 आवर चल गया है। तो ऐसे तो प्रोग्राम बहुत लंबा हम चला ही सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन आने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप देखिए अभी भी 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे, 100 लोग हम लोग हैं। लेकिन क्लासेस जब होती है तो इनको लगता है कि हम कैमरा ऑफ करके अपनी क्लासेस करें। तो अब जो आज सुना है तुम लोगों ने, जो स्वामी जी ने बताया है, अगर सारे बच्चे कैमरा ऑन करके अपनी क्लासेस अटेंड करोगे तो बिल्कुल कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छी वाली फीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, बहुत अच्छा फील करोगे। सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग सेशन रहा। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी। मैम प्लीज अनाउंस द विनर्स। यस, ओके। सो हमने एक फोटोग्राफ्स कुछ दिए थे कैप्शन राइटिंग के लिए, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर है सोफिया मिर्जा, एंड सेकंड पोजीशन में है हिमांशी दत्ता, एंड थर्ड पोजीशन पे 2 लोग हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं,
कीर्ति माथुर एंड क्रिस्टीना। और जो अभी स्पीच जो स्टूडेंट्स ने दी है उसमें बोला सबने बहुत अच्छा है, सबने अपने अपने अलग थॉट्स लिए, डिफरेंट तरीके से अपने स्पीच क्रिएट की और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोट्स यूज किए, लेकिन जो जजेस का डिसीजन था वो फाइनल डिसीजन ही हम मानते हैं। हो सकता है इसमें कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि उन्होंने अच्छा नहीं बोला, लेकिन बोला सबने अच्छा है क्योंकि कंटेंट सबका ही काफी अच्छा था। तुम लोगों ने जो भी कंटेंट जहां से भी लिया, जैसे भी लिया, लेकिन कंटेंट अच्छा तैयार किया। सो फर्स्ट पोजीशन पर आयुषी वर्मा है, सेकंड पोजीशन पर शशांक हैं एंड थर्ड पोजीशन पर सजल हैं। तो लेकिन खुशी, जय सभी ने काफी अच्छा बोला, तो सबको बहुत 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 धन्यवाद। और इस आशा के साथ कि आगे भी जो भी स्पीचेस तैयार करोगे बहुत अच्छी स्पीचेस तैयार करोगे। इसमें कुछ लोगों ने कुछ वर्ड किया था, शायद भूल भी गए थे, मनसा वाचा कर्मना, तो वो लाइन ये है, मेरे ख्याल से शशांक ने बोला था इसको। और चिंतन करो चिंता नहीं, ये वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सभी के लिए है, ना केवल स्टूडेंट्स के लिए, ये सीनियर जूनियर सबके लिए है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चिंतन करना है, मनन करना है, पढ़ाई करनी है, आगे आना है, बहुत ऊंचा बढ़ना है, तो और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, सबको खुश रहना है। खुशी श्रीवास्तव ने कहा भी और वो खुश भी नजर आ रही है, सारे बच्चे खुश नजर आ रहे हैं। सो अगेन थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. And congratulations to the winners. Now I would like to express my gratitude to our special guest for today, Swami Vedatitananda, for his time. I would like to extend heartfelt gratitude to Mr. Aman Sahani, Chairman DME, Director General Bhavar Singh, Vice Chairman DME, Dr. Ravikant Swami, Director DME, Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, for their constant support and guidance. Also, many thanks to the judges for speech competition, Dr. Manasvi Maheshwari and Manmeet Kaur, Assistant Professor DME Media School, and to the judges of caption writing competition, Mr. Muhammad Kamil and Mr. Vishal Sahai, Assistant Professor DME Media School. Now, I would like to thank Shreya Jha and Shruti Pandey, student conveners of Spark, and members of Spark, Hani Khurana, Jigyasa Khanna, Ananya Verma, and the entire team for their hard work and efforts. I express my gratitude to Akshata Sharma, Naitik Bhatt, Anjali Kulal, Tina Salanki for their constant technical support. Also, I would like to thank Ms. Mudita Raj, Assistant Professor, and Ms. Shruti V.S., Assistant Professor DME, and Spark facilitators for their efforts. Also, I would like to thank all the participants and students who became a part of this program. Thank you everyone for joining us today. Now, I, Hani Khurana and Ananya Verma will take your leave. Have a nice day ahead. The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.